Hello, you're watching my YouTube channel. I'm your host, Kamran Ashir. Today, I have invited a guest in this vlog, and I'm gonna discuss her life, her visions, her goals, and most importantly, her field. Hi, and welcome. We are delighted to have Maliha Ban here today with us. Maliha, thank you so much for joining us today. Thank you so much, Kamran, for having me. How are you? I'm great. Thanks for asking. But to start this interview, Maliha, properly, could you please tell us what inspired you to pursue a career as human resource HR executive, technical recruiter, admin executive, and definitely perhaps share a bit about your journey, which helps you leading up to your current role? Yeah, sure. So after completing my BS, I went into the job market. Hmm. और जब मैं job market में गई, I got to meet a lot of recruiters, and I actually really liked the thing, the way they inquired about your career goals, your qualification, और ये सारी चीजें like इसमें बहुत सी और streams आती हैं, career development, training and development, सारी चीजें. So when I met these people, I got really inspired, and that was the time I did my BS in IR, that is International Relations. But later on, I switched into MBA, and my specialization is in HR. So that was the thing. When I started MBA, I had this thing in my mind that I had to do my specialization in HR. Yeah, so this was the whole thing behind taking HR as my career pursuit. Okay, and that's really a great thing. I'm thinking about that when someone goes for an interview and they came to know he or she is from HR. So they think that they Yeah. are going to hire me or they are going to reject me. So, how's your experience so far in HR department? Okay. This is actually a very important question. So there's a misconception among the people that HR is just about hiring and firing, but in reality, इस तरह नहीं है, इस तरह की चीज नहीं है. HR is there to guide you. HR is there to approach you for a certain position, for a certain vacancy. Hmm. लेकिन जो job description regarding your role, इसके अलावा आपका interview, everything, ये सारा दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एचआर. जो आपका जो इमीडिएट मैनेजर है, जो आपके डिपार्टमेंट के मैनेजर है, ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस. जो इनिशियल इंटरव्यू होता है, दैट इज एक्चुअली टेकन बाय द एचआर. लेकिन जो आपका सेकंड इंटरव्यू होता है, जो आपका सेकंड ऑन साइट इंटरव्यू होता है, दैट इज एक्चुअली टेकन बाय योर मैनेजर. और उसमें आपकी फील्ड की नॉलेज चेक की जाती है, एंड एचआर इज ऑब्वियसली ओवर देयर एज वेल, जो कि आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स देखते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड Hmm. दीज थिंग्स, कि किस तरह आप कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्चरली फिट है या नहीं है, ऐसी चीज. Okay, and what are some of the biggest challenges you face as an HR executive, and how do you address them to ensure smooth HR operations? Okay, so one of the biggest challenge, if I talk about, is candidate ghosting. Yeah, Hmm. so as an HR, I'm telling you this कि स्टार्ट ऐसे होता है कि आपने एक इंटरव्यू की, आपके एक ईमेल चली गई है आपकी कैंडिडेट को, उन्होंने कंफर्मेशन भी दे दिया है या Hmm. इंटरव्यू की या फिर ज्वाइनिंग. लेकिन एट द डेट ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपके Hmm. जो कैंडिडेट है, ही डिडंट अपीयर. और व्हेन यू आर अप्रोचिंग देम, उनका सेल फोन बंद आ रहा है, उनको उनको कोई आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे. एंड अगेन यू हैव दिस एम्बेरसमेंट के आई हैड scheduled दिस इंटरव्यू, और अभी जो कैंडिडेट है, ही इज नॉट हियर. So this is actually a very embarrassing thing, but unfortunately this thing is very common. और दिस एक्चुअली गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, जो कि होना नहीं चाहिए. जो कि आई गेस जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो इमर्जिंग करियर ओरिएंटेड पीपल हैं, उन सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दिस एक्चुअली गिव्स अ रियली बैड इंप्रेशन जब आप ये काम करते हैं. और सेकंड चीज जो वो है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, उनको किस तरह मोटिवेटेड रखना है. और जो रिटेंशन वाली चीज होती है कि कंपनी में आपने एम्प्लॉयज को कैसे रिटेन करना है. सो उसके लिए सेशंस होते हैं आपके, वन टू वन सेशंस भी होते हैं, ग्रुप सेशंस भी होते हैं विद योर एम्प्लॉयज, जिसमें ओपन डिस्कशन होती है. वी गेट टू नो अबाउट देयर कंसर्न्स. उसके अलावा हम उनका फीडबैक लेते हैं रिगार्डिंग द वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, रिगार्डिंग देयर वर्क, रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू देयर वर्क. उनका जो वर्क बर्डन है, वर्क प्रेशर है, इज दैट फीजिबल फॉर देम. तो ये वाली सारी चीजें हैं. और इसके अलावा एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग दे देते हैं
जिसकी वजह से डेफिनेटली एम्प्लॉयज गेट टू नो कि जो कंपनी है वो पहले एम्प्लॉयज को रख रही है, सामने पहले प्रायोरिटी पे रख रही है। तो इस चीज से ये चीज भी हम केटर कर देते हैं। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज में या मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये भी एक होता है, एक कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन समहाउ ये चीजें मैनेज हो जाती हैं, तो Hmm. ग्रेजुअली होती हैं, टाइम लगता है, लेकिन दे कैन बी मैनेज्ड। Hmm. And what strategies do you find most effective in attracting top talent, particularly for technical roles? Okay, so talking about the technical roles, that टेक्निकल रोल्स में ऑब्वियसली आप जरा ज्यादा टेक्निकल साइड पे ही देखते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि द फर्स्ट थिंग के जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन पर एक तो आपकी एक स्ट्रांग प्रेजेंस होनी चाहिए, लाइक आपकी जो कंपनी है, आपका जो ब्रांड है, उसकी एक स्ट्रांग प्रेजेंस हो, जिसकी वजह से जो हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, दे गेट टू नो अबाउट योर कंपनी। और इसके साथ साथ जो हमारी टेक्निकल वेबसाइट्स हैं, जैसे गिट हब है, इसके अलावा एक दो और भी हैं जहाँ पे प्रोग्रामर्स का बेसिकली कम्युनिटी होती है, उसके थ्रू भी आप बहुत सी अच्छे आप प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी में यू गेट टू नो अबाउट देम। और इसके अलावा जो आपके टेक्निकल मीटअप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, इन सब के थ्रू यू कैन एक्चुअली रिटेन अ गुड टेक्निकल पर्सन। Hmm. And how do you और इसके साथ evaluate? साथ जो हम अगर Okay, go ahead. Yeah. yeah. अच्छा, you were talking about the evaluation thing. Yeah, so over here I would say कि evaluation का जो criteria होता है specifically technical roles में, वो ये होता है कि हम जो technical tests होते हैं और इसके अलावा psychometric tests भी होते हैं, जो obviously जो related to coding या programming इन सब से related होता है, और इसके थ्रू हम assess करते हैं कि either this person is suitable for the role or not। और सिर्फ technical side हम नहीं देखते, इसके अलावा एज एन एचआर उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल भी देखते हैं कि आइदर दिस पर्सन हैज दिस अमाउंट ऑफ। Yeah. All right, Maria, you were telling about the HR role, and you were telling me that how you help the candidates. They came for an interview. They come for an interview, and they are expecting a lot from the HR staff that they are going to help them or they are going to support them, right? So, did you ever face any challenge from the candidate side? And if it's shareable, Yeah, because this question is like quite relevant to me, because nowadays we are having interviews for some positions. So the biggest challenge from the candidates that we are facing, excuse me, nowadays is time management। टाइम मैनेजमेंट का मसला इस तरह से आता है कि हम अपनी तरफ से कैंडिडेट्स को बहुत कंपनसेट कर देते हैं। टाइम हम उनकी मर्जी से रख लेंगे जिस टाइम उनके लिए फीजिबल है, और बाकी भी हम उनके अकॉर्डिंगली डे रख लेंगे, लेकिन जो टाइम वो भी बताते हैं। आई गेस अगर हम 50 में से मैं कहूंगी कि 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टाइम पे आते हैं, जिनकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है, और बाकी जो हैं दे आर लाइक कोई आधा घंटा लेट है, कोई 15 मिनट लेट है। सो इट्स दिस थिंग, और आई गेस दिस इज द बिगेस्ट हर्डल। and most important thing is that it's really a drawback. They want to get a job, and HR definitely call them for an interview, and they are coming late. एग्जैक्टली, And they या defend एग्जैक्टली एंड themselves. दिस, Actually, ma'am, there were a lot of traffic on the road. There was a rain, so या I was unable to come on a time. I had a bike problem. So these are not the problem of the office. एग्जैक्टली समटाइम्स दे गिव सच लेम एक्सक्यूजेस दैट आपको भी पता होता है कि ठीक है, लेकिन देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी प्रोफेशनल। लेकिन आई गेस पता चल जाता है, इसलिए कैंडिडेट्स को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अबाउट देयर जॉब, इट्स नॉट सम यूनिवर्सिटी इवेंट और प्रोजेक्ट्स, इट्स Hmm. इट्स अ सीरियस थिंग। या Yeah. Okay. Maria, what initiatives have you implemented to enhance employee engagement and retention within the organization? Okay, so Kamran, we have started this thing. We give Employee of the Month certificates to our employees. Like monthly, हमने start किया हुआ है कि जिस employee की performance सबसे ज़्यादा like outgoing होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी promising होती है, उसको at the end of the month हम देते हैं एक employee appreciation certificate होता है, employee star of the month basically certificate होता है।
और इसकी वजह से एक बहुत ही एक ऑब्वियसली सेंस ऑफ मोटिवेशन ना सिर्फ उस एक बंदे में आती है बल्कि बाकी टीम मेंबर्स में भी आती है। इसके अलावा हम ये भी करते हैं कि हम लोग एंगेजमेंट सेशंस भी रखते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट सेशंस, जिसमें वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वी टॉक अबाउट हम अपने एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, उनके इवन हम उनके मसलों के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके अगर कोई कंसर्न है, और इवन अगर उनको किसी भी चीज में हेल्प चाहिए, और बिल्कुल ओपन डिस्कशन होती है। वी हैव अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट विद आवर एम्प्लॉयज। वी डू क्रैक जोक्स, वी डू मेक लाइक हम रील्स बनाते हैं, वी डू हैव अ फन टाइम। सो आई गेस ये सारी जो चीजें हैं, दिस नॉट ओनली इंक्रीजेस देयर मोटिवेशन, इसके साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा टाइम काम करते रहेंगे, एक जगह रहेंगे, तो इससे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो Hmm. वी डू गिव देम स्पेस कि वो एक आराम से अपने काम भी करें और फन भी करें साथ साथ। It's a good thing that you are doing that. It's a BPO industry. या Are you working there or any other organization? no no basically it's a company. We do provide IT solutions and marketing agency as well. It's not a call center culture, right? That they are It's not a employees. call center. Yeah, Lucon is basically a company. We do provide IT solutions and marketing, और इसके साथ साथ they have their own call center as well. That is Lucon Energy Solutions. That operates in night, and that is different. Like, yeah, It's a the US company is call different, center. and yeah, it's a US based call center. Yeah, Where is located? but it so we are actually located in Civic Center Phase 4, Beria Town. All right. Okay. Let's move Yeah, on. Maliha, can yeah. you describe your approach to resolving conflicts within the workplace and how you maintain a positive work environment? Okay, so obviously, like conflicts do arise at the workplace. Obviously, they are very much common. So Hmm. what I do is that whenever a conflict arises, I first of all I just listen to this listen to both of the sides के अगर एम्प्लॉयज का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या वजह हुई है, क्या दोनों की बात आप सुनेंगे, दोनों साइड्स की आप बात सुनेंगे। उसके बाद यू कैन गो फॉर अ मिडवे जो कि दोनों के लिए फिजिबल हो। एंड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो दोनों एम्प्लॉयज हैं जिनको इशू आ रहा है, उन दोनों को आप बिठाएं, एंड यू कैन गिव देम टाइम कि आप डिस्कस करें, एंड यू कैन फाइंड अ वे थ्रू जिस और इस ये दिस थिंग इज एक्चुअली क्वाइट यूजफुल, क्योंकि इस तरह से हमने डिस्कशन की, ओपन डिस्कशन की है, दोनों साइड्स ने अपने व्यूज बताए हैं कि हमें ये इशू आ रही है। तो हम एक ऐसा फिर पाथवे निकाल लेते हैं कि जिससे दोनों के लिए इजी होती हैं चीजें, और देन इशू इजीली सॉल्व हो जाता है। Hmm. या Okay, that's really great. And if you find time for yourself, for entertainment and other activities, what you do for या fun? Yeah, actually, the routine is like quite busy, but if I do get some time, I mostly go with my friends, or sometimes I read or watch some series, or like, yeah, this is the thing. Yeah. Hmm. And what opportunities for professional development do you believe are essential for HR professionals to stay current in the Okay. field? Okay. So, specifically, if we talk about the HR profession, Hmm. so in nowadays there's a lot of trend of community gatherings. It's This trend is so much on peak in Karachi and Lahore, but Islamabad में भी अब start हो रहे हैं, community meetups हो रहे हैं, specifically HR personnel से community meetups हो रहे हैं। और इसके अलावा जो आपके होते हैं job fairs होते हैं यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, Hmm. उधर डिफरेंट जब आप जाते हैं डिफरेंट कंपनीज आई हुई होती हैं, यू Hmm. गेट टू नो अबाउट अदर एचआर के जो लोग हैं उनसे आप मिलते हैं, बहुत सीनियर लोगों से भी मिलते हैं, बिगिनर से भी मिलते हैं। सो यू गेट टू लर्न अलॉट फ्रॉम देम। और इसके साथ साथ जो कोर्सेज होते हैं, जो आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं एचआर की, लाइक जिस तरह आपकी है सर्टिफाइड एचआर प्रोफेशनल का जो सर्टिफिकेशन है, इसके अलावा और भी सर्टिफिकेशंस हैं। सो ये एक्चुअली बहुत हेल्प करती हैं आपकी टू अंडरस्टैंड द वर्क डायनेमिक, स्पेशली एचआर के परस्पेक्टिव से, और किस तरह आप जैसे अब चीजें बहुत चेंज भी हो रही हैं,
अगर हम टेक्नोलॉजी की भी बात करें और इसके अलावा भी वर्क डायनेमिक्स बहुत चेंज हो रही हैं, तो बेसिकली ये सर्टिफिकेशंस आपको अप टू डेट रखती हैं रिगार्डिंग ऑल द चेंजेस और किस तरह यू हैव टू कीप योरसेल्फ गोइंग विद ऑल दीज थिंग्स. Mm. Maliha, thank you so much for joining us today. It was really wonderful having you here and learning from your experiences. But before I wrap up, is there anything else you would like to share with your audience or any message you would like to leave them with? Yeah, I would just I have this message for the students who are still studying in university or who are in their final semester. I would just ask them. This is a request. I would say this is a request from me. That they should start doing. They should actually start working on freelancing projects, or they should even start doing different courses, obviously related to इन fields के related ही हों courses वगैरह, लेकिन वो अभी से courses start कर लें और freelancing projects start कर लें. और जो इंटर्नशिप्स होती हैं इनिशियली आपको शायद फ्री इंटर्नशिप्स भी करनी पड़े, लेकिन इनिशियली आपको एक आपकी फील्ड की नॉलेज आ जाएगी, मार्केट का पता चल जाएगा किस तरह आपने कॉर्पोरेट सेटिंग में किस तरह से काम करना होता है. तो ये चीजें आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर लें उतना ही अच्छा होता है, जितना जल्दी आप चीजें सीख जाएंगे. ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन आपको एक नो हाउ हो जाएगी डेफिनेटली, वो आपको आगे फर्दर हेल्प हेल्प आउट करेगी बहुत ज्यादा. Any message or any suggestion for me? Sorry, I didn't get your question. Any message, any suggestion for me? I didn't get your question. Can you Okay, no just speak a problem. bit louder? Yeah, actually, I'm speaking. Any message or any suggestion you would like to share to me? For you. Yeah, Okay, okay, okay. So, yeah, Kamran, I would say that first of all, I would really appreciate your work. That I've seen some of your videos, and you are doing an amazing work, I would say. And you do have an extensive experience. And this thing that I saw one of your posts that was like you surpassed 100 interviews. It was about that. So that yeah. was a great thing. But yeah, so that was a great thing, and mashallah, you are doing great, and keep doing it. Maria, thank you so much once again that you have given me your precious time and you participated in this interview. And I believe I'm gonna invite you for another episode with different questions, which will gonna help the people who do not have direct access to you, but they can watch this podcast or interview and they can easily get some tools, some suggestion to make their life successful. Thank you very much once again. Thank you so much. Have a Thank you. nice day, Mariha. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.